Hello dosto, welcome back to Atypical Medico, and this is the second video of the Dr. SAHAB series, case number 2, acute diarrhea. So after leaving from the Grahan camp at the day 4 at around 7:30 in the morning, we reached Minthaj at around 2:30 in the afternoon, and we are all out seeing that beautiful Minthaj camp. I was out taking some beautiful time lapses. I will keep them here. And I was just taking my time lapse, and a gentleman approached me. Let's take him as Mr. Husband. And he told me that his wife was suffering from diarrhea. They have started some bunch of medicines and it was not resolving. I was like shocked. Bunch of medicines? I have not studied them. Are there bunch of medicines for diarrhea? But then I further inquired, and he told me that we consulted Dr. Google, and it told that you should take this medicines. Okay, then I went with him. I followed him to his tent because I wanted to differentiate it between diarrhea and dysentery. So what is diarrhea? Diarrhea is watery stool, right? We have all had that after overeating, or that Pani Puri. We all have suffered episodes of diarrhea. But what is dysentery? Dysentery is diarrhea plus mucus and blood. That is a more severe form. Then I went to his tent and I further inquired with her. So what are the important findings I got? The first finding was that she had 6 episodes of diarrhea or watery stool, first starting from 9:30 in the night at Grahan camp, and it then continued in even also while trekking. Also she had 3 episodes. Second was she had some local chicken made dish at Grahan camp, and it was common because many people had that unhealthy craving because they were eating very healthy and vegetarian food from the last 3 days. So many of the people went to local stores for eating some unhealthy for cheat meals. So that was a history. And third finding was she was taking 3 medicines. First was an antimicrobial, that was azithromycin. Second medicine was a probiotic, and third was multivitamin. This was the findings. Now I will be presenting you the case history. First, name, husband ki wife, age 43 years old, occupation interior designer, resident of Bangalore, chief complaint 6 episodes of watery stool, origin, duration and progress. The origin was at around 9:30 yesterday. Duration is approx 14-15 hours now, and it was continuous, like she was having that feeling of diarrhea from the whole trek. Further, history of any past illness, no significant history. Personal histories, diet was she had an non-veg local made food which may have some hygiene issues. Further, sleep, she didn't had a good sleep because of episodes of diarrhea, and appetite was also reduced. Drugs, yes, she was taking 3 drugs, 1 antimicrobial, 1 probiotic and multivitamin. And family history, it's not important in this case. So further, why is diarrhea great worry? Diarrhea is great worry at this altitude because there are major 3 factors. First, that the Himalayan air is very dry, utterly dry. So you lose lots and lots of water in the form of water vapor while breathing. Second, that in cold weather we automatically get less urge to drink water. You may all have observed that in winters our water intake decreases and drastically decreases. And third, in diarrhea there is massive loss of water with electrolytes. So dehydration can be fatal in some conditions, and it may, if not untreated, may lead to hypovolemic shock,
coma and death. It's very extreme, but yes, it's a possibility. Now let's understand what is diarrhea. So diarrhea is watery stool. So but why watery stool? Large intestine is responsible for absorption of water. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए, और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, मे बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया ने कुछ सिक्रीट किया उसकी वजह से, या फिर हाइपर मोबिलिटी के, ये मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े हो और आपका लगेज कन्वेयर बेल्ट पे आ रहा है पर कन्वेयर बेल्ट बहुत फास्ट घूम रहा है, तो आप अपना लगेज उठा ही नहीं पाओगे. सिमिलरली अगर फूड बहुत फास्ट लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाएगा तो उसे वाटर अब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन को. ऐसा होता है, तो इसे कहते हैं हाइपर मोबिलिटी ऑफ फूड. सो दिस आर द रीजंस फॉर डायरिया. सो अगर अब आपको डायरिया क्यों होता है पता चल गया, तो आपको ट्रीटमेंट भी पता चल गई. येस, ट्रीटमेंट इज एंटी मोटिलिटी ड्रग. वी हैव टू रिड्यूस दिस मोटिलिटी, एंड इफ फर्दर इट इज नॉट ट्रीटेड, अगर कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, देन वी हैव टू एड एंटी माइक्रोबियल्स. क्यों? बिकॉज द बैक्टीरिया इज स्टिल इन अ गुड कॉन्सेंट्रेशन टू कॉज द डिजीज. सो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स क्या करता है, नाम से पता चलेगा, मोटिलिटी रिड्यूस करेगा. तो अगर पहले लार्ज इंटेस्टाइन फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करके फूड को निकाल दे रही थी, तो अब उसके कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गए, तो वाटर अब्जॉर्ब करने का टाइम बढ़ गया. सो वाटरी स्टूल बनना कम हो गया और नॉर्मल स्टूल वापस चालू हो गया. कौन से ड्रग का नाम है लोपेरामाइड, विच इज़ एन ओपियोइड क्लास की ड्रग है वो, और जो मैंने उन्हें दी. दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने सबसे पहले दी उन्हें, वो थी ORS. मैंने उन्हें एक बॉटल में ORS बना के दिया. वाई? ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, राइट. सो उसमें जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये ORS देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और जबकि आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो जिसमें वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट भी बहुत हो रहा है. सो मैंने उन्हें ये दिया. फर्दर फिर मैं अपने टाइम लैप्स लेने निकल गया. 2:45 के आसपास मैंने उनको दवाई और ORS बना के दे दिया, और फिर मैं अपने टाइम लैप्स के साथ चला गया, अपने लोगों के साथ बातें करने लग गया. फिर शाम को एट 7:30 मुझे वो कपल मिला एट डिनर, एंड उसके दवाई लेने के बाद शी हैड नो एपिसोड ऑफ डायरिया, एंड हर इंटरनल फीलिंग ऑफ दैट फीलिंग ऑफ वेलनेस, I can feel that, and she was also saying that yes, I can better, but she was like she had that subtle emotion कि तेरी वजह से नहीं, वो जो गूगल की दवाइयाँ थी ना उससे ही ठीक हुई हूँ मैं. एंड शी हैड दैट, एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट गूगल से दवाई ली थी ना उसको टाइम लग गया थोड़ा एक्शन दिखाने में अपनी, इसलिए, वरना मैं ठीक हो ही जाती, उसमें कुछ इतना सीरियस नहीं था. आई जस्ट स्माइल्ड. और फिर मैंने भी एक बढ़िया सा स्टेटमेंट उन्हें बोल दिया. मैं बोला आप ठीक हो जाओ वही इंपॉर्टेंट है, गूगल से हो या मुझसे हो या किसी और से हो. एंड शी ऑल्सो स्माइल्ड बैक एट मी. मिस्टर हस्बैंड वॉज लाफिंग लाइक एनीथिंग, एंड दिस वॉज द केस. द पेशेंट वॉज नॉट दैट कंप्लायंट, उन्हें एक ऐसी थी एक, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, एंड शी वॉज लाइक के गूगल को तेरे से तो ज़्यादा ही पता होगा, मे बी, पर जितना इम्पॉर्टेंट था वो मेरे को पता है. एंड दिस इज हाउ द थर्ड केस एंडेड. इट वॉज अ नाइस एंडिंग बिकॉज आफ्टर दैट देर वॉज नो फर्दर शी हैड एनी एपिसोड ऑफ डायरिया, एंड शी वॉज एबल टू कंप्लीट हर ट्रैक ब्यूटिफुली, एंड शी ऑल्सो रीच द समिट. अभी ये भी चल रहा है, पीपल आर लाइक एलोपैथी या आयुर्वेदा. आई एम एज अ पर्सन ऑफ एलोपैथी, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि व्हाट इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इज़ द हेल्थ ऑफ पेशेंट. अगर वो आयुर्वेदा से ठीक हो रहा है तो आयुर्वेदा सही, एलोपैथी से हो रहा है तो एलोपैथी से. बाकी आयुष तो आपको पता ही होगा, आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी, अगर किसी से भी ठीक हो रहा है तो बढ़िया है. अगर पर मैं ऐसा मानूंगा कि अगर सर्जिकल प्रोसीजर है तो वो किसी स्किल्ड डॉक्टर को ही करनी चाहिए. वो स्किल्ड होना चाहिए, उसने वो सीखा होना चाहिए कि कैसे, व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, कहाँ पे क्या होता है और कैसे कट करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो.
This was the case second of the Dr. Saab series. And if you enjoyed this video, do consider subscribing to my channel. And stay tuned for more case studies, more interesting things, more fun facts, and seeing a typical world from an atypical eye. Thank you so much. Take care.